Hello students, welcome to the online classes of Sri Mahavir International School, Rainwal. I hope you all are safe at your home and also doing studies on time. So today I am going to start the new topic, that is aids or auxiliaries to trade. This is part of previous topic, that is business activities. So what is auxiliaries to trade? The activities which helps in smooth flow of trade are known as aids to trade या auxiliaries to trade. Again I repeat, the activities which help in smooth flow of trade are known as auxiliaries to trade. These activities make buying and selling of goods more easy. These type of activities make buying and selling of goods more easy. These activities are known as service and together constitute service sector or tertiary sector of commerce. These help in removing various problems of trade which arises in production and distribution of goods. The common auxiliaries or aids to trade are like first transport or communication, banking and finance, insurance, warehousing, advertising. So बिजनेस में या ट्रेड में किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए, उन डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करने के लिए ऑक्सिलरीज कुछ एक्टिविटीज़ है जो बहुत यूज़फुल होती है, जो उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करती है. So first is transport and communication. Transport refers to the movement of goods from one place to another. आप 4th क्लास से पढ़ते आए हो, इवन आजकल तो हर बच्चे को पता होता है ट्रांसपोर्ट क्या होता है. So transport refers to the movement of goods from one place to another place. Transport removes the place difficulty, right? The production of goods takes place at one place whereas these are demanded in different parts of the country. Like the obstacle of place is removed by the transport. For example, tea is produced in Assam and Darjeeling but is consumed in all the parts of the country. This is made possible only because of transport. Transport is also helpful in movement of raw material and other resources to the industries and factories. Labor is also moved from one place to the other with the help of transport. आज आप लोग हो, हम नॉर्मल पर्सन्स है, हम स्टूडेंट्स है, आप भी तो अपने घर से स्कूल आते हैं. किसका यूज़ होता है उसमें? ट्रांसपोर्ट का ही तो होता है. So along with transport, communication is also an important service. Communication helps in exchange of information between producers, consumers and traders. The common communication services are postal service, telephone service, fax, internet and many more. So communication is a very important part of the business या trade, because आप बात करते हो कि मुझे ये चाहिए, मेरी ये डिमांड है, आप मुझे कोटेशन बताओ, आप मुझे इसका प्राइस बताओ, मैं अब आपको फिक्स करती हूँ. जो भी बात होती है बिजनेस रिगार्डिंग, ट्रेड रिगार्डिंग, आज आप दूर दूर बैठे हो तो वो किसके थ्रू होती है? पोस्टल सर्विसेज या टेलीफोन सर्विस या इंटरनेट, फैक्स एंड मैनी मोर. सो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. Transport facilities movement of raw material to the place of production and the finished products from factories to the place of consumption. Along with the transport facility, there is also need for communication facilities so that producers, traders and consumers may exchange information with one another. Okay, fine. Now banking and finance. Banks and financial institutions provide credit facility. Credit facility means udhar, credit facility, loan, etc. to provide finance for smooth flow of business activities.
Banks help the businessmen to overcome the problem of funds. Along with provision of funds, the commercial banks provide many other facilities such as collection and deposit of checks, issue of bank draft, discounting of bill of exchange. The bank also provide the facility of overdraft, cash credit limit, arrangement and payment in foreign currency in case of foreign trade. आज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो हम वहाँ पे पैसे देने थोड़ी ना जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज करते हैं, जो वहाँ का जो बैंक है वहाँ के बैंक्स के थ्रू हमारा डीलिंग होता है, वहाँ के जो कंज्यूमर्स या ये मान लेते हैं हम जो प्रोड्यूसर्स है, जो बिजनेसमैन है उनके थ्रू हमारा लिंक जो रहता है वो उनके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग डिटेल्स वगैरह हम उनको शेयर करते हैं, वो चाहते हैं उस अकॉर्डिंग हम उनको पेमेंट करते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी हमें कौन प्रोवाइड करता है, बैंक के थ्रू प्रोवाइड होती है। बैंकिंग आपको बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं बैंक्स। तो बैंक्स में आज आपके पास में कंप्लीट बिजनेस को रन करने के लिए पूरा पैसा, ऐसा तो नहीं है कि कंप्लीट आपके पास में कैश पड़ा ही हो, नहीं, कुछ लोग लोन्स लेकर भी बिजनेस करते हैं, लोन्स लेते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, बट एक टाइम के लिए आपको कुछ वो फैसिलिटी तो प्रोवाइड होती है। तो ये बैंकिंग एंड फाइनेंस फैसिलिटी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आज हम किसी से कुछ हमें किसी को पेमेंट करना है तो आज हम फ़ोन पे कर देते हैं, गूगल पे कर देते हैं, इंस्टेंट पेमेंट हो जाता है। तो ये सब फैसिलिटी क्या है, बैंकिंग एंड फाइनेंस की है। ओके, नाउ so business activities cannot be undertaken unless funds are available for acquiring assets, purchasing raw material and meeting other expenses. So necessary funds can be obtained by businessmen from a bank. Thus banking helps business activities to overcome the problem of finance. Banking helps business activities to overcome the problem of finance. Commercial banks generally lend money by providing overdraft and cash credit facilities, loans and advances. Bank also undertake collection of checks. Okay, now insurance. What is insurance? Businessmen have to bear various type of risk. Insurance provides protection from some kinds of risk such as risk of loss due to fire, theft, accident. The insurance company provides protection to employees also against the risk of accident while working. So businessmen have to pay a nominal amount of premium and in return they get compensation for the loss from the insurance company. आप एक फिक्स आपको प्रीमियम पे करना होता है, लाइक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में आपने बहुत सुना होगा। उसमें क्या करना होता है, आपको एक फिक्स टाइम के लिए या बहुत टाइप्स की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो उसमें आपको प्रीमियम पे करना होता है, ठीक है, मंथली हो गया या क्वार्टरली हो गया, जो भी है, या ईयरली हो गया या जो भी है, आपको प्रीमियम पे करना होता है। इफ़ आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपकी डेथ होती है, उस टाइम आपको पेमेंट मिल जाता है, या जो भी मैच्योरिटी टाइम होता है उस मैच्योरिटी पीरियड पे आपको वो पेमेंट मिल जाता है। उससे आपकी एक हेल्प हो जाती है। आजकल हम करवा के रखते हैं, जैसे कार इंश्योरेंस है, हमारी कार को कोई भी प्रॉब्लम हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया और उसका इंश्योरेंस कराया हुआ है तो आपको उसका पेमेंट मिल जाएगा, कॉम्पनसेशन मिल जाएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होता है। आप फायर लॉस हो गया, फायर से कोई आग से कुछ वेयर हाउस में कोई आग लग गई, उससे कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप इंश्योरेंस करा रखा है आपने, तो जितना आपने इंश्योरेंस करा रखा है उतने अमाउंट तक आपको पेमेंट आपको मिल जाता है, कॉम्पनसेशन आपको मिल जाता है। नाउ फोर्थ इज वेयर हाउसिंग. यूजुअली देयर इज ए टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स. Goods are not consumed immediately when these are produced. For example, wheat, rice, etc. are produced in a particular season only, but these are consumed throughout the year. So these are to be stored. A special arrangement has to be made to store the goods to prevent the loss and to keep them fresh. Okay. Warehousing helps the businessman to overcome the problem of storage. Warehouses are constructed keeping in mind the nature of goods. So warehouse facilitates the availability of goods whenever required. Okay.
warehouse, usually goods are not sold or consumed immediately after production. Okay, now they are held to in stock market, them available as and when required. So special arrangement must be made for storage of goods to prevent loss or damage. Warehousing helps business firm to overcome the problem of storage and facilities the availability of goods when needed. Prices are thereby maintained at a reasonable level through continuous supply of goods. Okay, now these are the auxiliaries to trade. These are the most important topic. These are the most important topics and most important, that is transport and communication, banking and finance, insurance, warehousing, advertising. जो रेगुलर आपको इनका नॉलेज होना चाहिए, आपको इनका प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए कि कैसे ये वर्क करना है. आप कंप्लीट जो आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं, हमारा कंप्लीटली जो सब्जेक्ट ही बिजनेस स्टडीज़ है, तो हमें बिजनेस की हर एक नॉलेज रखनी होगी कि क्या चल रहा है, कब कैसे चल रहा है, कैसा मूवमेंट हो रहा है, मार्केट कैसा है, मार्केट में चेंजेस किस टाइप के आते हैं, डिमांड क्या हो रही है, सप्लाई क्या है. ओके, नाउ न्यू टॉपिक, बिजनेस रिस्क. So, business risk. What is business risk? Business risk refers to the probability of losses or inadequate profits due to uncertainties or unexpected events. Again, I repeat, business risk refers to the probability of losses or inadequate profits due to uncertainties or unexpected events. So, which are beyond control. In simple words, we can say business risk means a chance of incurring losses or less profit than expected. For example, demand for a product may decline due to change in taste and preferences of the customer, or due to change in fashion, or due to change in competitors' policy, etc. These factors cannot be controlled by the businessman, and these can result in decline of profit or can also lead to loss. This is business risk. It's very important topic of this chapter, business risk. So, nature of business risk. First is business risk arises due to uncertainties. So, uncertainties means when you are not sure of what is going to happen in future. Uncertainties means when you are not sure of what is going to happen in future. Common examples of uncertainties are change in demand, government policy, technology, etc. Business risk is due to these uncertainties. आप कोई भी प्रोडक्ट में डिमांड, आपकी किसी कस्टमर की डिमांड चेंज हो गई कि नहीं मुझे तो ये नहीं चाहिए, अब तो ये चेंज आ गया है, तो मुझे तो इस टाइप का कुछ न्यू प्रोडक्ट चाहिए. तो अब आपका जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें प्रॉब्लम आ गई ना. वो अनसर्टेनिटीज ही तो थी कि नहीं हुआ, बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है वो पता नहीं चला हमें, और हमने वही चीज़ प्रोडक्शन में रखी, कस्टमर की डिमांड को हमने ध्यान नहीं रखा या हमें ध्यान में नहीं रहा, वो अनसर्टेनिटीज ही है. सो द टर्म बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ inadequate प्रॉफिट और इवन लॉसेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, दैट इज अनसर्टेनिटीज या बिजनेस रिस्क. So, business enterprises constantly face two types of risk, speculative and pure. Speculative risk involve both the possibility of gain as well as the possibility of loss. So, speculative risk arises due to changes in market condition, including fluctuation in demand and supply, changes in price or changes in fashion and taste of customers. Favorable market conditions are likely to result in gains, whereas unfavorable ones may result in losses. So, pure risk involve only the possibility of loss or no loss. The chance of fire, theft or strike
are examples of pure risk. Their occurrence may result in loss, whereas no occurrence may explain absence of loss instead of gain. तो दो टाइप की रिस्क होती है, स्पेकुलेटिव एंड प्योर रिस्क. प्योर रिस्क कौन सी रिस्क हुई? जिसमें आग से लग गई, आग से कोई प्रॉब्लम हो, आग लग गई तो सामान जल गया, ये रिस्क हो गई. या लेबर्स की स्ट्राइक हो गई, वो हो गया. या चोरी हो गई तो सीधी सीधी आपके क्या हुआ, आपको लॉस हो गया. एक स्पेकुलेटिव रिस्क क्या हो गई कि कस्टमर की डिमांड चेंज हो गई, मार्केट का एनवायरनमेंट चेंज हो गया. ओके, तो टू टाइप की रिस्क होती है. और नेचर में आपने देख लिया, बिजनेस इज एडेड ड्यू टू अनसर्टेनिटीज. नाउ uncertainties, again I repeat, uncertainties refers to the lack of knowledge about what is going to happen in future. Natural calamities, changes in demand, prices, changes in government policy, improvement in technology, etc. are some of the examples of uncertainties which create risk for business because the outcome of these future events is not known in advance. Now, risk is an essential part of every business. Yes, जहाँ बिजनेस होगा वहाँ रिस्क तो होगी. ऐसा तो है नहीं बिना रिस्क, कोई भी काम बिना रिस्क नहीं होता है. ठीक है. So risk is an important characteristic of business. No business can avoid risk, although degree of risk may vary. Risk can be reduced but cannot be eliminated. आप उसको कम कर सकते हो कि हाँ, कि आपने कुछ ऐसा कर रखा है कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ होगी. जैसे अब फायर है तो आपने इंश्योरेंस करा रखा है, वो रिस्क तो है कि कभी भी आग लग जाएगी, तो वो रिस्क है. बट आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो आपको उसका कुछ तो पैसा मिलेगा, कुछ तो कॉम्पनसेशन मिलेगा. सो every business has some risk. No business can avoid risk, although the amount of risk may vary from business to business. Risk can be minimized but cannot be eliminated. Risk can be minimized या risk can be reduced but cannot be eliminated. Now, third point is degree of risk depends upon the nature and size of business. So, the degree of risk depends upon the type of business. For example, a business involved in fashion items bear more risk as compared to business involved in standardized goods. Similarly, a business operating at large scale bears more risk as compared to small scale business houses. Okay. Now, nature of business, type of goods and services produced and size of business are the main factors which determine the amount of risk in business. For example, a business dealing in fashionable items has a high degree of risk. Similarly, a large scale business generally has a higher risk than what a small scale has. अब छोटा बिजनेस करोगे तो उसमें कम रिस्क होगी, ज़्यादा बड़ा करोगे तो उसमें ज़्यादा रिस्क होगी. सो more profit, more risk. Big business, big risk. Now, fourth is profit is the reward for bearing the risk. Yes, profit is the reward for bearing the risk. Businessmen earn profit because they are bearing risk. No risk, no gain. No risk, no profit. So, larger the risk, more is the profit. An entrepreneur bears the risk with the expectations of earning profit. So, no risk, no gain is all particular which apply to all type of business. Greater the risk involved in a business, higher is the chance of profit. An entrepreneur undertakes risk under the expectation of higher profit. Profit is thus the reward for the risk taking. Okay. So, 4 points of nature of business. First is business risk arises due to uncertainties. Second, risk is an essential part of every business. Third is degree of risk depend upon the nature and size of business. Fourth is profit is the reward for bearing the risk.
नाउ नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, कि किन कारणों से, क्या क्या कारण हो सकता है बिजनेस रिस्क के, क्या क्या किस टाइप की रिस्क हो सकती है, हम ये भी बोल सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है. सो लुक, फर्स्ट इज नेचुरल कॉजेज. नेचर इज एन इंडिपेंडेंट and human beings have no control over it. Natural calamities like earthquake, flood, famine, etc. affect a business a lot and can result in heavy losses. So the natural causes are such type of uncertain factors that human beings cannot make any preparation against. आप earthquake के against आपको नहीं पता कि वो कब होगा, किसी को नहीं पता है, क्योंकि वो कभी भी हो सकता है, नेचुरल है, वो नेचर की तरफ से कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकती है. अब बाढ़ आएगी तो आपको बता के आएगी क्या कि मैं आ रही हूँ आज, नहीं ना. तो उसके बारे में आप कैसे सोच सकते हो, पहले ही अज्यूम कैसे करोगे. सो दिस टाइप ऑफ रिस्क लाइक नेचुरल कॉजेज. सेकेंड इज ह्यूमन कॉजेज. ह्यूमन कॉजेज आर रिलेटेड टू ए चांस ऑफ लॉस ड्यू टू ह्यूमन बीइंग और एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. The dishonesty of employees can bring heavy losses for business. Example, the employees may leak a business secrets to a competitor and may commit fraud also. The employees may be careless and may mishandle the machinery and resources, which can also bring heavy losses by wastage of resources. The employees may hamper the production by going on strikes, etc. This can also lead to heavy loss for business. Now third is economic causes. Economic causes कौन से होंगे? Economic causes are related to chance of loss due to change in market condition. There can be price fluctuation in the market. There can be change in fashion, taste, preferences and demands of customers. So there can be change in the degree of competition. All these have a direct impact on the earning of the business. So when change in government policy affects the business a lot, for example in 1971 when Janta government came in power, the Coca-Cola company and many other foreign companies were sent back from India. और GST ले लो, जब GST हुआ तो बहुत सारी चेंजेस हुए बिजनेस में, ठीक है. तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इकोनॉमिक चेंजेस के या कॉजेज के. नाउ फोर्थ इज फिजिकल कॉज. All the causes which result in damage of assets are considered as physical causes. For example, change in technology may result in machinery being outdated. Use of old technology, mechanical defects may also result in damage of assets such as bursting of boiler, accident to employee, etc. So, economic changes, these include uncertainties. These are unforeseen events like political distribution, mechanical failures. All the types of causes. These all are types of causes. Natural causes, human causes, economic and physical या other causes. Now types of business risk. Insurable and non-insurable risk. So insurable risk means the risk which can be recovered are called insurable risk. The losses which can be made goods or losses for which company can compensation from insurance company are called insurable risk, that or या फिर pure risk. Okay. Generally the natural and physical risk are insurable risk. Example, businessman can take a fire insurance policy to recover the losses due to fire. He can also take insurance policy and to get protection from flood, earthquake or from damage or of assets such as bursting of boiler, etc. So हम इस इंश्योरेबल रिस्क को प्योर रिस्क भी बोल सकते हैं. सेकेंड इज नॉन इंश्योरेबल रिस्क या स्पेकुलेटिव रिस्क.
The risk for which no protection is available are called non-insurable risk. कोई प्रोटेक्शन नहीं है, दैट इज नॉन इंश्योरेबल. प्रोटेक्शन है, कुछ आपको मिल जाएगा, उससे लॉस होने के बाद कुछ आपकी उस लॉस की भरपाई हो जाएगी, तो दैट इज इंश्योरेबल रिस्क. सो द रिस्क फॉर विच नो प्रोटेक्शन इज अवेलेबल आर कॉल्ड नॉन इंश्योरेबल रिस्क. Generally, the economic risk are human risk are non-insurable risk. The businessman cannot get compensation for change in demand or loss due to or careless of employees. Whether the risk is insurable or non-insurable, only the loss can be shed, but risk remains. So this first chapter is completed. Please do all the NCERT's questions, and if you have any query या any doubt in first chapter, please drop a comment या drop a message on WhatsApp if you have contact number of mine. So thank you, do studies and have a nice day to all.